Okay, हो गया. शुरू होने वाला है. Please, भाई साइड में आइए. Please come to the. Ladies and gentlemen, we request you all to please take your seats. Please take your position, please. Please. Thank you. Freedom in our minds and words. Memories running through our blood. We sail with valor in our souls and honor in our hearts. तट की सुरक्षा दुश्मन पर कमान रखते हैं. शहर में देशभक्ति हिम्मत की जबान रखते हैं. दुनिया में कोई पर्याय नहीं हमारी नौसेना का. हथेली पे जान और दिल में हिंदुस्तान रखते हैं. नमस्ते. Good evening. जय श्री कृष्णा. केम छो सूरत. Ladies and gentlemen, distinguished guests and fellow officers, I, Lieutenant Apurva Gite, a proud pilot in the Indian Navy, welcome each one of you and promise to make this evening a memorable one. यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी गणमाननीय अतिथियों का मैं संध्या देवी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. हृदय की गहराइयों से अभिवादन करती हूँ. सर्वप्रथम हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल का. Accompanied by the Chief of Naval Staff, Admiral R. Kumar, Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Dinesh K. Tripathi, and Flag Officer Commanding Gujarat Naval Area, Rear Admiral Anil Jaggi. वैसे संध्या, सूरत को सिटी ऑफ डायमंड्स भी तो कहते हैं ना? अपूर्वा, सूरत को न केवल सिटी ऑफ डायमंड, सूरत साड़ी और टेक्सटाइल में भी जाना जाता है. Well, in that case, Sandhya, let me take this opportunity to dive you all into a little history of this sparkling city. Situated on the banks of River Tavi, Surat is not just a home to the largest diamond manufacturing center in the world and sports more than 5,000 diamond manufacturing units, but also has a glorious maritime past. Surrounded by a vast coastline along the Arabian Sea, Surat has been an important trade center in the 16th, the 17th and the 18th centuries. And not just a port, Surat was also a flourishing center for the major shipbuilding activities. आज का ये कार्यक्रम भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय युद्ध और सूरत के युद्ध चिन्ह के अनावरण के स्वर्ण अवसर पर आयोजित किया गया है.
भारतीय अर्थव्यवस्था में सूरत उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज इसी सूरत शहर का नाम रक्षा क्षेत्र में भी जुड़ने जा रहा है। भारतीय युद्ध और सूरत के युद्ध चिन्ह का आज यहाँ पर अनावरण होने जा रहा है। तो संध्या, क्या इसीलिए सब कहते हैं कि सूरत के जेवर सवारात ही नहीं, पर यहाँ के लोग भी बिल्कुल हीरे जैसे हैं? बिल्कुल अपूर्वा, मैं आपको बता दूं, मैं भी इस ब्यूटीफुल सिटी सूरत से ही हूँ। Of course, you are no less than a diamond. I mean, obviously, you are also a proud naval wife. हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, हम हैं लहरों के पहरेदार और हम हैं हर क्षण तैयार। Ladies and gentlemen, we proudly present to you the magnificent Indian Navy song, हम तैयार हैं। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्य पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। सागर के देवता, वरुण को नमः, शंभु वरुण शंभु वरुण। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। है उस मिट्टी के बने हुए जिस पर देश प्रेम का ठप्पा है, तभी गर्व से देखो बोल रहा सागर का चप्पा चप्पा है। दुश्मन के लिए हम तैयार हैं, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती,
आत्मनिर्भर भारत का हम भी अटूट एक हिस्सा है सच्चा सच्चा अभिमान है हम गौरव का था किस्सा है अपनी कोशिश है सिद्ध वाली हम सीना आगे करते हैं देश की नई उम्मीदों पर रक्षा मार्ग भरते हैं नई कल की नई हुंकार तैयार है बिल्कुल तैयार है जान से तैयार है इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं जय भारती जय भारती हम हैं नौसेना हम हैं भारत के सारथी जय भारती भारती जय भारती भारती हम हैं नौसेना हम हैं भारत के सारथी 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 Resonating with the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's Atmanirbhar Bharat, Indian Navy has turned various milestones to become truly Atmanirbhar. Today, 65 of our state-of-the-art ships and submarines are under construction in various Indian shipyards, a clear reflection of Indian Navy's enduring support to India's indigenous warship building measures. Built at two different geographical locations, Indian Navy's warship Surat is also a product of this endeavor. આત્મનિર્ભર ભારતનો હેતુ ભારતને આર્થિક રીતે મજબૂત બનાવવાનો છે સ્વદેશી ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે આવો આપણે આત્મનિર્ભર ભારત દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા ભારતીય યુદ્ધ કોટોની એક ઝલક જોઈએ. Sovereignty on land is anchored by supremacy at sea. Doing just that is the modern Indian Navy, an Atmanirbhar three-dimensional force capable of operating across the spectrum of naval operations, from disaster relief to all-out combat. Our transformation from a buyer to a builder's navy has been inspired by our rich maritime legacy of indigenous construction. In the age of discovery, Surat was India's shipbuilding capital. Home to the Wadiyas, whose ships sailed across the world. What better proof of Surti craftsmanship and skill than Trincomalee, still afloat after 200 years. Today, there are 66 warships and submarines under construction in Indian shipyards. Building modern warships requires mastering new technologies and lays the keel of a strong nation. Leading the charge are the 15 Bravo stealth destroyers. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and under construction at Mazgaon Dock Shipbuilders is the latest of the class, Surat. It was on the banks of the Narmada that she took birth, where a major part of the hull was shaped. Surat was then slipped out and transported to Mumbai for final assembly and launch. From steel to every sensor and weapon, the 15 Bravo ships are made in India. Integrating the fighting component of the ships is their next generation indigenous combat system, enabling seamless networking with the fleet and operations centers ashore. As we power towards a blue economy,
Surat, the ship, will take inspiration from Surat, the city, which embodies the new resurgent India. And when duty calls, she will answer. હવે હું આમંત્રિત કરીશ ફ્લેગ ઓફિસર કમાન્ડિંગ ગુજરાત નેવલ એરિયા રિયર એડમિરલ અનિલ જગ્ગીને કે જેમના ઉપર ગુજરાતના 1214 કિલોમીટરના દરિયાકાંઠાની જવાબદારી છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ગુજરાતની સમુદ્રીય સીમા અન્ય દેશો સાથે પણ જોડાયેલી છે કે જ્યાં સુરક્ષાની જિમ્મેદારી ખૂબ જ ચોક્કસાઈ તેમજ જવાબદારી ભરેલી હોય છે. હું વિનંતી કરીશ ફ્લેગ ઓફિસર કમાન્ડિંગ ગુજરાત નેવલ એરિયા રિયર એડમિરલ અનિલ જગ્ગીને કે તેઓ મંચ પર આવી અમારા મહેમાનોને સંબોધિત કરે. Honorable Chief Minister of Gujarat, Chief of the Naval Staff, State Ministers and members of Legislative Assembly of Gujarat, Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Chief Secretary Gujarat, Mayor of Surat City, senior officials, eminent industrialists and personalities, veterans present here today, Commanding Officer Designate of Warship Surat, media personnel, officers, ladies and gentlemen. As Flag Officer Commanding-in-Chief, Flag Officer Commanding Gujarat Naval Area, it gives me immense pleasure to welcome you all today to this special occasion and the ceremony of unveiling of the Crest of Warship Surat. Surat is the fourth and the last ship of the next generation stealth-guided missile destroyers of the Indian Navy under the Project 15 Bravo program. And she is presently under construction at our very own shipyard, Mazagon Docks Limited, Mumbai. This is the first occasion where the crest of a warship is being unveiled in the very city after which it has been named. Presence of the Honorable Chief Minister of Gujarat at this ceremony makes this event extra special. Thank you, sir, for being here. This August gathering would be aware that Surat was the most important maritime trade link between India and many other countries from the 16th to the 18th century. The city was also a flourishing center for shipbuilding activities, and the vessels built in Surat during this period were especially renowned for their longevity, as the MCs had mentioned a little while earlier. The city has undergone significant transformation over the past few centuries, and it is today recognized as the commercial capital of the state of Gujarat and also the second largest commercial hub of Western India. Indian Navy is therefore immensely proud of naming and dedicating the latest stealth destroyer to this vibrant and important city. With the rich maritime heritage and the shipbuilding legacy of the city, it was only apt and befitting that the warship has been named after the Surat city. Another important facet which merits mention and was earlier stated by the masters of the ceremonies is the fact that the city takes a position of pride as the world's largest diamond manufacturing center, and it is therefore popularly referred to as the Diamond City of the world. May I humbly submit that the Indian Navy would present and dedicate another diamond to the city in the very near future.
The only difference being that on this occasion, the diamond, cut to perfection, would be grey in color and it would spread its splendor sailing on the oceans. It is indeed a unique honor for me to be present here today as we unveil the crest of the warship Surat. I express my heartfelt gratitude to one and all present here for making this evening special. Have a pleasant evening. Thank you. Thank you, sir. If your actions inspire others to dream more, to learn more, to do more, and to become more, you are a leader. Ladies and gentlemen, may I now request the Chief of the 4th largest Navy in the world, who commands the Blue Water Indian Navy and leads its maritime operations across the Indian Ocean region and well beyond. The Chief of Naval Staff, ladies and gentlemen, Admiral R. Hari Kumar, to address this wonderful gathering. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendrar Patel ji, Central and State Ministers, members of Legislative Assembly of Gujarat, Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, the Chief Secretary of Gujarat, Flag Officer, Gujarat Naval Area, Mayor of the City of Gujarat, eminent industrialists and personalities, the Commanding Officer Designate of INS Surat, veterans, friends from the media, ladies and gentlemen, good evening and namaste. At the outset, I extend my deepest gratitude to all of you for taking the time out from your busy schedules and joining us for this event and dinner reception right here in the sparkling city of Surat in Gujarat. To Gujarat, with its rich maritime history and tradition, has always been a profound connection with the maritime domain. एक ऐसा स्टेट है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है और ये कनेक्शन सिर्फ ज्योग्राफिक ही नहीं है बल्कि हिस्टोरिक और इकोनॉमिक भी है। ये कनेक्शन गुजरात की आइडेंटिटी का एक अभिन्न हिस्सा सदियों से रहा है। And from being a bustling state and a hub for trade and commerce in the past to playing a vital role in the modern Bharat's maritime landscape, Gujarat has continued to serve as a beacon of maritime enterprise. To put this in perspective, Gujarat has been the first mover in the maritime industry and is fast emerging as a leader in the blue economy of the world. इस स्टेट की 1600 किलोमीटर कोस्टलाइन भारत में सबसे लंबी है और यहाँ सबसे ज्यादा ऑपरेशनल और कमर्शियल कार्गो पोर्ट्स भी हैं। And not just that, Gujarat is the first state in Bharat to privatize the state's port sector and successfully develop some of the finest all-weather deep-water greenfield ports on a build, own, operate, transfer basis. It is also in the state that we have one of the largest facilities in the world for ship recycling at Alam, contributing to about 98% of recycling capacity of Bharat and about 32.6% of global recycling volume. More specifically, situated close to Hazira port, Surat has a glorious shipbuilding heritage. It was here that from the 16th century to 18th century, the shipbuilding activity in Bharat thrived. The whole coast of Tapi was specially meant for shipbuilders. Stavorinus, a Dutch explorer, spoke about ships that time costing about
rupees 75,000 being built at Surat at that time. These ships were longer, bigger and better than the contemporary Western ships in use at that time. In fact, दुनिया के सबसे बड़े जहाज यहाँ बनते थे. It was only later that we had shipyards in Daman, Dabhol, Bassein and Mumbai. Therefore, while Surat is rightly called the Diamond City of Bharat, it could also be termed as the start point of modern shipbuilding in the country. So carrying forward that legacy, Surat has emerged as a thriving industrial and commercial center, a testament to the resilience and adaptability of the people of the city. An example of this trade is perhaps the Hazira Gokha Ro-Pax ferry service, which marks the beginning of a radical transformation of maritime transportation sector by reducing the travel time from 10 to 12 hours to just 3 to 4 hours. Suffice to say, Gujaratis have a unique way of looking at seas that extends beyond just its visual appeal to being the enabler of growth and prosperity. These maritime endeavors inevitably hinge upon an assured umbrella of security, safety and stability on the high seas. So Bharatiya Nausena, as the principal manifestation of Bharat's maritime power, fulfills this role by safeguarding our maritime interests, ensuring the free flow of trade and responding to any threats, whether from the seas or beyond. आज सुबह यहाँ आने से पहले मैं कोटेश्वर गया. वहां पर भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज का एक डिटैचमेंट और बीएसएफ का यूनिट जो है उनके साथ डिस्कशंस किया. And I want to assure all of you that हमारे देश की सुरक्षा काबिल और मजबूत कंधों पे है और हमें ये ड्यूटी करने में बहुत गर्व महसूस होता है. साथ ही नौसेना देश की इकोनॉमिक उन्नति और डेवलपमेंट में भी एक इनेबलर का काम करती है. अपने इस कोशिश में हम माननीय प्रधानमंत्री के सागर विजन यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन से प्रेरित होते हैं. Beyond the maritime sector, Bharatiya Nausena has been actively engaging with maritime community, fostering a spirit of unity and cooperation. The Navy's humanitarian efforts during times of disaster, including in the state of Gujarat, such as relief operations, have further cemented the bond between the Navy and the people. So this sense of togetherness underscores the significance of this evening. So as the Chief of the Naval Staff, मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय नौसेना इस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए कमिटेड है. Further, the Navy remains actively engaged in promoting defense manufacturing, shipbuilding, and fostering technological advancements contributing to the Atmanirbharta initiative. I am confident that our collective efforts to strengthen our maritime capabilities will continue the prosperity and security of Bharat. अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं सूरत के लोगों को उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. जैसे सूरत देश का एक चमकता हुआ चेहरा है, वैसे ही भारतीय नौसेना जल्द ही इस सिटी के नाम से प्रेरित होकर अगले साल एक स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप, हमारा सबसे बड़ा जंगी जहाज आईएनएस सूरत को कमीशन करेगी. ये वॉरशिप भारत के तिरंगे को पूरे विश्व में गर्व से लहराएगी और एक उन्नत भारत का उज्जवल चेहरा बनेगी.
आशा है कि इस जहाज के कमीशन होने के बाद भारतीय नौसेना और सूरत के बीच का रिश्ता और मजबूत होगा. As a mark of this affiliation, I also propose to put up a big scale model of the ship in the city at a prominent place with the kind support and approval of the Honorable Chief Minister. Once again, I thank the Honorable Chief Minister and all ministers, senior dignitaries present here for taking time out from your busy schedule to grace this event. Thank you and enjoy the rest of the evening. Jai Bharat. थैंक यू सर। एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, है बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये मेले रंगवा दो। इस वक्त ना करोड़ों सत्य हो रहे हैं, अब उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। तो आइए, समय हो चुका है उस शुभ घड़ी का जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। जिस पल का पल के पिछाए हम इंतजार कर रहे थे, वो पल अब आ चुका है। Well, ladies and gentlemen, it's a naval tradition for a warship to display a unique emblem, also known as the ship's crest. This crest is embedded on the uniform badges of the ship's crew and also on the ship's superstructure as she rallies to the cause of the battle and sails into the seas. So, ladies and gentlemen, fasten your seatbelts and hold your breath as you're about to witness a moment that will be etched in not just history of Surat, but each one of your memories forever. The unveiling of Indian Navy's warship Surat's Crest, the youngest and the last ship of Project 15 Bravo, stealth guided missile destroyer, warship Surat. ભારતીય યુદ્ધ પૌર સુરતના યુદ્ધ ચિહ્ન નાવરણ માટે હું આમંત્રિત કરી આજના મુખ્ય અતિથિ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને. May we have a big round of applause for our chief guest. Ladies and gentlemen, we proudly present to you the splendiferous crest of Indian Navy's warship, Surat. On behalf of the Indian Navy, I now request the Chief of Naval Staff, Admiral R. Harikumar, to present a scale model of warship Surat to our chief guest, Chief Minister of Gujarat, Honorable Bhupendrar Patel, as a token of remembrance of this momentous and one-of-a-kind event. मुकेश अरे यार पण બધા પાછળ છે ભાઈ એથી કરને યાર હું વિનંતી કરીશ આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને કે તેઓ અમુક સૌને સંબોધિત કરે. આટલા બધા બધાયું છે બધા હું વિનંતી કરી આખા માઈક ની ચલો તો વિનંતી કરીશ આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને કે તેઓ અમુક સૌને સંબોધિત કરે.
स्मार्ट सिटी सूरत में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अनवेलिंग सेरेमनी ऑफ क्रेस्ट ऑफ वॉरशिप में मेरे साथ उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, महापौर श्री दक्षेश भाई मावाणी, एडमिरल श्री आर हरिकुमार जी एवं श्रीमती कला हरिकुमार, पद्मश्री कानूभाई टेलर, श्री मथुर भाई सवाणी, समाज श्रेष्ठी श्री गोविंद भाई धोड़किया, श्री लालजी भाई पटेल, वाइस एडमिरल श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी, अधिक मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी जी, पुलिस कमिश्नर श्री, म्युनिसिपलिटी कमिश्नर श्री, कलेक्टर श्री, उपस्थित सौ सेना के अधिकारीगण, आमंत्रित महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और हमारी सैन्य ताकत दिनों दिन और ताकतवर हो जाती रही है। प्रधानमंत्री के दूरंदेशी नेतृत्व के कारण हमारा देश डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो रहा है। आज वॉरशिप सूरत के क्रेस्ट के अनावरण का यह अवसर इस बात के साक्षी बनने का अवसर है। भारतीय नौसेना के लेटेस्ट फ्रंटलाइन वॉरशिप प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत 4 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डेस्ट्रॉयर वॉरशिप तैयार किए गए हैं, जिसमें आज चौथे वॉरशिप सूरत के क्रेस्ट का अनावरण हुआ है। गुजरात देश का सबसे लंबा और सबसे विशाल 1600 किलोमीटर कोस्टलाइन वाला राज्य है। एक समय में गुजरात की प्राचीन बंदरगाह लोथल, सूरत, घोघा और भरूच विदोष के साथ बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक कोस्टलाइन सुरक्षा की नजरिए से भी स्ट्रेटेजिक है। पड़ोसी देश की समुद्री सीमा गुजरात से जुड़ी हुई है। इस संदर्भ में गुजरात में कोस्ट गार्ड, मरीन कमांडो के ऑपरेशंस भी सतर्क और सक्रिय है। सूरत का यह समुद्र तट भारत के गौरवशाली समुद्री इतिहास का साक्षी रहा है और आज आधुनिक भारत के भविष्य के सूर्योदय का भी साक्षी बना है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पहले सूरत के पोर्ट पर 84 देशों के जहाज लंगर डालते थे, यानी 84 देशों के ध्वज सूरत के पोर्ट में फहराने जाते थे। यही कारण है कि सूरत का पोर्ट 84 बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। प्राचीन काल से सूरत ने भारत के समुद्री व्यापार और दुनिया के साथ व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने में एक सेतु का काम किया है। इतना ही नहीं, सूरत शिप बिल्डिंग में भी माहिर था और यहाँ बने जहाज 100 साल तक समुद्र में चलते थे। आज भी सूरत शहर पश्चिम भारत का दूसरा सबसे बड़ा कॉमर्शियल हब है। भारतीय नौसेना ने सूरत की समृद्ध समुद्री विरासत और शिप बिल्डिंग में उपलब्धियों को सेलिब्रेशन के तौर पर इस वॉरशिप का नाम सूरत रखा है। आज वॉरशिप सूरत के क्रेस्ट का अनावरण हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। एक नौसेना के वॉरशिप का नाम जिस शहर के नाम से रखा गया है, उसी शहर में वॉरशिप के क्रेस्ट का अनावरण हो रहा है। ऐसा गौरव हासिल करने वाला गुजरात पहला राज्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने राज्य में डिफेंस इकोसिस्टम के निर्माण के लिए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जैसी कई परियोजनाएं शुरू की। यह प्रधानमंत्री जी के प्रयासों
और उनकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि आज गुजरात कई अन्य क्षेत्रों के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी अग्रणी बन रहा है। फिर चाहे वाइब्रेंट समिट में डिफेंस पेवेलियन हो या डिफेंस एक्सपो हो, प्रधानमंत्री जी ने लगातार ऐसी पहल की है जिससे विश्व की श्रेष्ठ डिफेंस टेक्नोलॉजी का परिचय मिले और हमारे यहाँ डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़े। आज गुजरात में कई एमएसएमई ऑपरेशनल है जो डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण पार्ट की सप्लाई करते हैं। गुजरात में डिफेंस सेक्टर में जुड़ा पूरा इकोसिस्टम खड़ा है और इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसके लिए गुजरात सरकार ने एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को राज्य में लागू किया है। 2016 में एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी की घोषणा करने वाला गुजरात देश का प्रथम राज्य बना। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गुजरात देश की सुरक्षा और विशेष रूप से नेवल सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की एक नई यात्रा की शुरुआत की है। आज एक और जहां आईएनएस विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर गहरे समुद्र में आत्मनिर्भर भारत की ताकत की शान बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर तेजस जैसे अति आधुनिक लड़ाकू विमान आसमान में नए भारत की शक्ति की गर्जना कर रहा है। हमारे सैन्य बलों की इक्विपमेंट की एक सूची तैयार की गई है जिन्हें अब केवल स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। देश में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए ऐसे महत्वपूर्ण कदमों के कारण ही आज नए भारत की शक्ति की गूंज पूरे विश्व को सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने देश के अमृत काल में आत्मनिर्भर और विकसित सशक्त भारत का निर्माण का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। डिफेंस सेक्टर के प्रोजेक्ट 15B के तहत वॉरशिप सूरत सहित सभी 4 वॉरशिप का निर्माण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। आत्मनिर्भरता की और अग्रसर भारत भविष्य में शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गुरु।